So good morning, everyone. We'll continue with the Fourier series. So till now we have seen four intervals. One is 0 to 2 pi, minus pi to plus pi, and 0 to 2l and minus l to plus l. So next type of problem, obtain Fourier series for f of x is equal to minus sine pi x by c for minus c less than x less than 0 is equal to sine pi x by c 0 less than x less than c. We have to obtain the Fourier series for this function. So the function, first we have to see whether it's given Fourier series. Now since Fourier series is given, check the interval. Now interval is minus c to plus c. Interval is minus c to plus c, which means that you can check whether the function is an even function or odd function. But the function is defined in two intervals. The function is defined in two intervals. So how do we check for even and odd when we have the function defined in two intervals? Do you remember we had done in minus pi to plus pi also? Anybody? याद है किसी को हमने कैसे किया था? चेक फॉर, यस करेक्ट. क्या चेक करना है हमको? हमें पहले इंटरवल में x को माइनस एक्स पुट करना है. हमें पहले इंटरवल में x को माइनस एक्स पुट करना है. अगर हमारा सेकेंड इंटरवल आ गया तो वी कैन से दैट द फंक्शन इज एन इवन फंक्शन. So we have to put x is equal to minus x in the first interval, and if we get the second interval, it is an even function. So now put x is equal to minus x in the first. पूरे interval में x को minus x put करना है. तो क्या बचेगा यहाँ पे? So when I put x is equal to minus x in the first interval, we will get f of minus x is equal to minus sine of pi into minus x upon c. माइनस सी लेस देन एक्स लेस देन 0. यहाँ पे भी x को माइनस एक्स पुट करना है. So when I multiply this inequality throughout by minus sign, the inequality will get reversed. So we'll get 0 less than x less than c. So in 0 less than x less than c, the function what we get it is sine of minus theta is minus sine theta. So we'll get sine pi x by c. So which is the second interval. Second interval क्या दिया था? Sine pi x by c 0 less than x less than c. So when I put x equal to minus x in the first interval, I will get if I get the second interval, then the function is an even function. अगर ये जो आंसर आया वो माइनस ऑफ ये आंसर है तो फिर it is an odd function. Okay? When you put x is equal to minus x in the first interval, check the answer. So see whether in this interval you get this answer. If you get the same answer, it is an even function. And if you get minus of the answer which you have got here, then it is an odd function. So here in this case, we get the same function. Therefore, the function, that is this function is an even function. And when the function is an even function, we will get bn equal to 0. We have to calculate a0 and an. What is the value of L in this case? What is the length of the interval? What is the length of the interval? Interval is defined from minus c to plus c. Minus c से लेके plus c तक defined है. तो उसका length कितना होगा? Minus c से लेके 0 तक length हो जाएगा c. 0 से c तक again c. तो total length of this interval is 2c. Normally length of the interval for a Fourier series is 2l. So here we are having 2c. So I can write length of the interval is 2l, which is equal to 2c. Therefore, L will be equal to c. Okay? Fourier series में the length of the interval is either 2 pi or 2l. If it is 2 pi, then nothing has to be done. But if it is a L interval, if it is defined in 0 to 2l, then the length of the interval will become 2l, and compare that length of the integral with the given length, that is equal to 2c, and calculate the value of c. Otherwise, what you can do is
the function is defined in minus C2 plus C, or the function is defined normally in minus L2 plus L. So L value is equal to C. Either you calculate the length of the interval and then calculate L, or directly from the interval you can write the value of L. Now calculate A0 and AN. So L की value C है. Now what is the function which will be taken for calculating A0 and AN? First interval होगा या second interval होगा? फॉर्मूला में क्या आता है? A0 is equal to 2 by L integral 0 to L, 2 by C integral 0 to C. तो 0 to C में जो भी फंक्शन है वो फंक्शन हमको fx में लेना है. Okay? In 0 to C, whatever is the function given, that we have to take it as what is that? The function f of x. So calculate A0. So for an even function, A0 हो जाता है 2 by L integral 0 to L fx dx. Then L के बदले यहाँ पे C है. So 2 by C integral 0 to C. Now function is defined in two intervals. तो हमें देखना है 0 to C में कौन सा फंक्शन है. तो in 0 to C the function defined is sin pi x by C. इसको इंटीग्रेट करना है. Apply the upper limit, lower limit and calculate. Just tell me what is the value. What is the value of A0 when we integrate? Now, sine integration is 4 by pi, okay. Sine integration is minus cos. Sine integration is minus cos. So, minus cos pi x by C upon pi by C. Apply the upper limit, lower limit. तो value क्या होता है? She's saying 4 by pi. What about others? साइन को इंटीग्रेट करो और अप्लाई द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट. फोर बाय पाई. ओके, तेजस ऑल्सो, अनुराग ऑल्सो. ओके, ठीक है, चेक करते हैं हम लोग. तो 2 by C कांस्टेंट है, बाहर रहेगा. साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई एक्स बाई सी अपॉन द कांस्टेंट पाई बाई सी बिटवीन द लिमिट 0 एंड c. अगर मैंने c को अपर लिमिट x को c पुट किया तो this c and c will get cancelled, or even I can take minus sign also common. So if I take, now this c will get cancelled here because this c will go to the numerator and that c and this c will get cancelled. तो बचेगा 2 by pi. ये माइनस साइन भी मैंने बाहर लिया है, तो बचेगा cos pi c by c minus cos 0. Cos pi c by c will become cos pi minus 1, and cos pi value is minus 1 because odd multiple of pi value is minus 1. तो होगा minus 1 which is equal to 4 by pi. Correct. तो 4 by pi आ गया A0 की वैल्यू. Now calculate AN. AN में जो भी fx है उसको हमें cos n pi x by c से मल्टीप्लाई करना है. An will be 2 by L integral 0 to L fx cos n pi x by L. L is equal to C and the function is sin pi x by C. How to integrate the function An? Sin pi x by C cos n pi x by C को हमें integrate करना है. We cannot apply u into v because you are having same function. कि दोनों ही trigonometric function है, तो we cannot apply u into v. तो हमें कैसे integrate करना है इस function को? How can we integrate the function? Okay, so using the trigonometric formula for 2 sin A cos B. Okay, so 2 sin A cos B, we know it is equal to sin A cos B. That comes in the expansion of sin A plus B and sin A minus B. So when we add, we will get 2 sin A cos B, and when we subtract, we will get 2 cos A sin B. तो हमें चाहिए 2 sin A cos B.
So using the formula 2 sin A cos B is sin A plus B plus sin A minus B. A is pi x by C and B is n pi x by C. ठीक है, A is pi x by C and B is n pi x by C. So substituting for A and B, this 2 can be taken with this function. So 1 by C रहेगा. फिर sin of A plus B. A plus B मतलब pi x plus C plus n pi x plus n pi x by C. दोनों को हमें add करना है. So when we add x is common, pi is not taken common here because pi remains a constant with respect to x. इसलिए pi को अंदर ही रखा है, खाली x को common लिया है. So we will get pi by C plus n pi by C into x plus sin of A minus B. So now you have got two different functions, sin A plus B plus sin A minus B. अभी दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना है. तो sin का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस cos. So integrating, sin integration is minus cos upon the constant part. Here also plus sin का minus cos upon the constant. You can take minus sign common after integrating and then apply the upper limit and the lower limit. Or we can, as it is, we can apply. First हमने sin A cos B को separate किया है using the formula 2 sin A cos B. So sin A plus B लिखा है, sin A minus B लिखा है और sin function को integrate किया है. The same step. Previous carry forward here. मैंने पहले माइनस साइन को कॉमन ले लिया है. उसके बाद अप्लाइड अपर लिमिट x as c एंड द लोअर लिमिट x as 0. ठीक है, कोई भी टर्म 0 नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे cos का फंक्शन है. cos 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 1. तो पहले हमने x को c पुट किया. अगर x को c पुट किया तो ये टर्म आ जाएगा फर्स्ट टू. माइनस साइन इज ऑलरेडी टेकन आउट. फिर लोअर लिमिट का माइनस साइन और उसके बाद x को 0 पुट किया तो 1 अपॉन दिस एंड 1 अपॉन दिस. ठीक है, तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव यूज्ड sin A cos B का फॉर्मूला, sin A plus B and sin A minus B निकाला है, उसको इंटीग्रेट किया है, अप्लाई द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट. Okay, now when we simplify this, again everywhere we have the c is common everywhere and here also we have c. This c will go to the numerator. This c will go to the numerator. So this c and this c will get cancelled. खाली pi plus n pi और pi minus n pi वाले terms बचेंगे यहाँ पे. And this c also will get cancelled here. So remaining ऐसा हो जाएगा. c will get cancelled. Minus sign वैसे ही रहेगा. Pi plus n pi, pi minus n pi, then 1 upon pi plus n pi and 1 upon pi minus n pi. ठीक है. Now tell me what is cos of pi plus n pi? What will be when we expand cos of A plus B? तो cos of pi plus n pi क्या होगा? Expand करो cos of A plus B और cos of A minus B and then cos A cos B minus sin A sin B वगैरह करके what is the value of cos of pi plus n pi? Okay, minus of minus 1 raised to n. ठीक है. Okay, fine then. Any other answer? Same ही है. Cos of A plus B expand करना है. Cos A cos B minus sin A sin B. Okay, when I expand that,
cos of cos A cos B minus sin A sin B. We know that sin A sin this part is equal to 0 because sin pi भी 0 है, cos n pi भी 0 है. तो खाली ये बचेगा cos pi into cos n pi, and cos pi value is equal to -1. So minus and cos n pi value is -1 raised to n. So it's correct, minus into -1 into -1 raised to n. Okay, तो ये हो जाएगा. मैंने उसका ऐसे ही रखा है, माइनस cos n pi रखा है, बाद में मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी -1 raised to n. So cos of pi plus n pi is minus cos n pi. Similarly, pi minus n pi will also become minus cos n pi because second term 0 ही होता है. So now we can replace the numerators by minus cos n pi in first two term. Okay, so minus sign is already taken now. Denominator you are having pi plus n pi, pi minus n pi, and numerator हो जाएगा minus cos n pi. यहाँ पे ये दोनों terms का numerator minus cos n pi. Simplify. Substituting for the numerator. So I will get numerator minus cos n pi, and baki all the terms are the same. Now, I think I can take minus sign outside again from all the terms. First term is negative, second term is negative, third and fourth are multiplied by minus sign. So I can take minus sign common, and already you have a minus sign here. So I can take minus sign common, and now if I take everywhere pi is also common. So I'll take 1 upon pi common. तो यहाँ बचेगा cos n pi upon 1 plus n, cos n pi upon 1 minus n, plus 1 upon 1 plus n, plus 1 upon 1 minus n. सब जगह से pi कॉमन लिया है और माइनस साइन कॉमन, तो ऊपर पूरा पॉजिटिव हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी 1 plus n और 1 minus n बचेगा. Now combine these two terms. After taking minus sign common, now combine that common denominators. 1 plus n वाले terms को combine करना है. You will get cos n pi plus 1 plus cos n pi plus 1. Again, cos n pi plus 1 is common, which can be again taken outside and replace cos n pi by minus 1 raised to n. उसके बाद cross multiply किया है यहाँ पे. तो 1 minus n plus 1 plus n upon 1 plus n into 1 minus n. Simplifying, n will get cancelled, we will get 2 upon 1 minus n square, minus 1 raised to n plus 1 upon pi into 2 upon 1 minus n square. Is it true for all the values of n? Is it true for all the values of n? No. So for which value of n this an is not valid? For n is equal to 1. Correct. When n is equal to 1, the denominator becomes 0, which means that the function becomes infinity. So this function is not valid for n is equal to 1. और an is true only for n not equal to 1. तो अभी हमको a1 अलग से निकालना पड़ेगा. तो कैलकुलेटिंग a1. तो a1 में क्या होगा, जो भी an का फॉर्मूला था उसमें हमें n को 1 पुट करना है. So a1 will become 2 by c integral 0 to c sin pi x by c cos pi x by c dx.
ठीक है, तो अभी कैसे इंटीग्रेट करना है इसको, 2/c इंटीग्रल 0 to c sin pi x by c cos pi x by c dx। कैसे इंटीग्रेट करना है, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए है या 2 साइन ए कॉस ए दिया हुआ है इंटीग्रल के अंदर, तो वी कैन राइट 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a। तो साइन 2a, that is combining this 2 also with sin a cos a, we can write 1/c integral 0 to c sin 2a dx, where a is equal to pi x by c। तो खाली x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, 2 pi by c is a constant। सो अगेन इंटीग्रेट साइन फंक्शन, तो फिर से माइनस कॉज आ जाएगा, एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1। ओके, 0 आ रहा है, ओके, this one also is saying 0, okay, there are 0, okay, page is also 0, so let's check that sin का integration minus cos upon the constant part 2 pi by c। अगर अप्लाई द अपर लिमिट किया तो c एंड c विल गेट कैंसिल, या माइनस साइन को हम बाहर भी ले सकते हैं पहले, तो अगर माइनस साइन को बाहर लिया तो cos 2 pi, okay, c by c minus 1 upon 2 pi by c। Now c and c will get cancelled. This c and c also will get cancelled. So I can write minus 1 upon 2 pi cos 2 pi minus 1. Now cos 2 pi we know it is equal to 1. So 1 minus 1 is equal to 0. Cos of even multiple of pi is equal to 0. So substituting a0, an and a1 value in the function f of x. Substituting a0, a1 and an. Substituting everything in f of x function. Dn is already equal to 0, substituting for a0, which is 4 by pi. An is this. Now this is, it starts from only 2. It is not true for n is equal to 1, and n is equal to 1. A1 is already equal to 0. Okay, so we have not written that a1 wala term. It starts from n is equal to 2 to infinity, whatever is the function an, into cos n pi x by c. Again simplifying, 4 by pi upon 2 will become 2 by pi, summation n varying 2 to infinity minus 1 raised to n plus 1. Next problem. Obtain Fourier series for fx is equal to a into x minus l less than x less than 0 and 0 less than x less than a less than l.
Tell me what type of function is this given function? A into x minus L and A into L plus x. Tell me what type of function is this given function? Odd है या even है या neither even nor odd? Odd है. Okay, how it is odd? हमें क्या करना है? X को minus x put करना है first interval में. So when x is minus x in the first interval, what is the answer we get? अगर हमने x को minus x put किया पूरे interval में, तो हमारा आंसर आएगा minus x a into minus x minus l less than minus x less than 0. पूरे first interval में हमने x को minus x put किया, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो हो जाता है, अगर हमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो वी विल गेट L greater than x greater than 0, or I can write 0 less than x less than n. So what is the value we get? What is the function we get? If I take minus sign common, I'll get minus a into x plus l. ठीक है, 0 less than x less than l में यहाँ पे दिया है a into l plus x, और हमारा आंसर आया minus a into l plus x, which means that minus of the given function we are getting. So it is an odd function. It's the negative second interval. The function is an odd function. So a0 an is equal to 0. We have to calculate only bn. ठीक है, हमें क्या करना है? x को minus x पुट करना है फर्स्ट इंटरवल में. अगर वही आंसर आता है उसके सेम टाइप ऑफ इंटरवल, मतलब अगर यहाँ पे minus x पुट किया तो ये इंटरवल हमको मिलना चाहिए, और ये इंटरवल में अगर वही वैल्यू आती है तो इवन फंक्शन है, माइनस ऑफ वो आता है तो इट इज एन ऑड फंक्शन. So here it is an odd function, which means calculating only bn. What is the value of L? What is the value of L? Length of the interval is 2L. यहाँ पे भी length of the interval is 2L only. So L is equal to L itself. We don't have to change in that formula. L की value L ही रहेगी. Okay. So now calculate bn. तो bn का फॉर्मूला है 2 upon L इंटीग्रल 0 to L fx sin n pi x by L. L वैसे ही रहेगा, खाली fx सब्स्टिट्यूट करना है. Now what is fx now? कौन सा फंक्शन लेना है? दो फंक्शंस दिए हैं, a इंटू x माइनस l और दूसरा दिया है a इंटू एक्स प्लस l. तो कौन सा फंक्शन लेना है हमको यहाँ पे fx के बदले? फर्स्ट इंटरवल वाला है या सेकेंड इंटरवल वाला है? सेकेंड इंटरवल. व्हाई? बिकॉज द फंक्शन जो हमको यहाँ पे जो लिमिट्स दिया है, दिस इज फ्रॉम 0 to l. So we have to see what is the function defined in the interval 0 to l. Right? तो सेकेंड वाला क्या था? a into x plus l or l plus x. Substituting for the function fx के बदले a into l plus x. Remember, a is a constant, l is also a constant. So we can take this a outside, and then now you have l plus x as one bracket, which is an algebraic function. Sine is a trigonometric function. Use u into v. Use u into v. अगर a को बाहर लिया तो this is u, this is v. So u इंटेग्रल v लिखना है और u को डिफरेंशिएट करते जाना है और v को इंटीग्रेट करते जाना है. तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा u इंटेग्रल v. साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस माइनस इसका डेरिवेटिव l इज अ कांस्टेंट, सो l प्लस x का डेरिवेटिव 1. इसका इंटीग्रेशन इज माइनस साइन n pi x by l upon n pi by l the whole square between the limit 0 and 1. Put x is equal to l and x is equal to 0. So when x is equal to l, साइन वाले टर्म में क्या बचेगा? यहाँ पे l हो जाएगा, तो l by l कैंसिल होके साइन n pi. अगेन साइन n pi is 0, साइन 0 is also 0. तो हमारा खाली अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट मतलब फर्स्ट टर्म ही रहेगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में. Substituting x is equal to l in the first term, x is equal to 0 in the second, in the first term, second term will become 0. अगर x को अपर लिमिट पुट किया तो l
माइनस कॉज एन पाई एल बाय एल अपॉन एन पाई बाय एल, ये वाला पार्ट 0 है, माइनस लोअर लिमिट के लिए x को 0 पुट करना है तो l प्लस 0 एंड देन दिस इज 1, सो माइनस 1 अपॉन एन पाई बाय एल. Simplify and see what is the answer we get. What is the answer we get? Trying to simplify. तो यहाँ पे L और L कैंसिल हो जाएगा तो cos n pi बचेगा. cos n pi is minus 1 raised to n. यहाँ पे 2L है, यहाँ पे भी L और L है, तो what will remain? 2AL upon n pi into 1 minus cos n pi. 1 minus 2 cos n pi. करेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे एक L कैंसिल हो जाएगा और ये वाला L जो है ऊपर चला जाएगा. इट इज इसलिए 2AL n pi दोनों जगह पे है, दैट कैन बी टेकन आउटसाइड. तो ये 2 विथ माइनस 2 cos n pi और ये वाला माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. तो आई कैन राइट 1 माइनस cos n pi, बट cos n pi इज minus 1 raised to n. Substitute in the what is that given function in the Fourier series fx is equal to a0 0 है, an 0 है, खाली bn का फंक्शन सब्स्टिट्यूट करना है. Substituting everything in the fx function with bn is 2al upon n pi into 1 minus 2 into minus 1 raised to n. सब्स्टिट्यूट करना a0 0 an 0, खाली bn का जो फंक्शन है सब्स्टिट्यूट करना है और fx लिखना है. Now we have to prove this result. fx is equal to summation n varying from 1 to infinity 2al upon n pi 1 minus 2 into minus 1 raised to n sin n pi x by l. ये सीरीज में से हमको ये वाला टर्म चाहिए, ये वाला सीरीज चाहिए. पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 5. ठीक है, मतलब हमें क्या है, एफ एक्स क्या था हमारा, a इंटू एक्स प्लस एल. So a into l plus x is equal to this c. This function I've written as it is. Now we have to give the value of x in such a way that ये पूरा टर्म जो है वो फंक्शन में यहाँ पे कहीं पे भी साइन का फंक्शन नहीं है. ओके, सो वी हैव टू पुट x वैल्यू इक्वल टू सम और x इक्वल टू सम वैल्यू in such a way that when we give the values of n from 1 to infinity, we will get this form 1 minus 1 by 3 plus 1 by 5. ऐसी हमें x की एक वैल्यू चूज करनी है. We know the values of sine of any angle, we know sin pi by 2 sine. We know the values of sine functions. L है, पहले हमें L को कैंसिल करना पड़ेगा. L should not be there in the sine, so substitute x in terms of L in such a way that L gets cancelled. और अगर देखेंगे तो यहाँ पे खाली ऑड टर्म्स हैं, इवन टर्म भी 0 होना चाहिए. तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x इन सच ए वे दैट अगर साइन ऑफ वो हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो साइन ऑफ जब n इक्वल टू इवन होगा तो 0 होगा, जब n इक्वल टू ऑड होगा तो वी विल गेट दैट सीरीज. जस्ट ट्राई द वैल्यू ऑफ lx. L के फंक्शन में होना चाहिए क्योंकि L also has to get cancelled. Okay, L by 2. Yes, very good, correct. Both of you are right. Yash and Harsh. X is equal to L by 2. हमें क्यों L by 2 पुट करना है, एक तो ये है कि L कैंसिल होना चाहिए
और अगर हम n pi by 2 लिखेंगे तो we know that sine of 1 pi by 2 is 1. Sine of 2 pi by 2 is sine pi, which is 0. Sine of 3 pi by 2 is minus 1. So that is why we will get alternate plus and minus, and also the even multiples of pi by 2 are equal to 0. है ना? तो हमें क्या करना है, x को l by 2 पुट करना है. When x is equal to l by 2, this will reduce to sine n pi by 2. Now put the value of n is equal to 1. अगर n की वैल्यू 1 है तो sin pi by 2 1 हो जाएगा. ठीक है, 2al अपॉन पाई हम लोग बाहर ले सकते हैं. अगर n की वैल्यू 1 है तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा? When n is equal to 1, I'll get 1 minus 2 into minus 1. That is 1 minus 2 into, that is 1 plus 2. That is equal to 3. ठीक है, तो ये टर्म हमेशा 3 रहेगा if n is equal to 1 है. n is equal to 2 में ये पूरा टर्म 0 हो जाता है. तो n is equal to 3 पुट किया तो भी इसका आंसर 3 आएगा. ठीक है, so when n is equal to even numbers, the whole function will become 0 because sine of even multiple of pi by 2 is 0. When n is equal to odd, ये पूरा टर्म जो है वो 1 हो, ये 3 हो जाएगा. 2a by pi can be taken out also. ओके, यहाँ पे भी x को l by 2 पुट किया और सिंप्लीफाई किया है, तो 2al by pi बाहर लिया. तो नाउ गिव द वैल्यूज ऑफ n इक्वल टू 1. तो यहाँ पे होगा 1 by 1, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 1. तो क्या बचता है? 3 अपॉन 1. पुट n इज इक्वल टू 2. n इक्वल टू 2 पुट किया तो ये हो जाएगा 0. पूरा टर्म 0 हो जाएगा बिकॉज 2 pi by 2 इज pi एंड sin pi इज 0. ये पूरा टर्म 0. नाउ n इज इक्वल टू 2. When n is equal to 3, when n is equal to 3, again 1 upon 3, ये पूरा टर्म 3 हो जाएगा. Sine of 3 pi by 2. What is the value of sine of 3 pi by 2? 270. What is the value of sine 3 pi by 2? 1 है कि -1 है? -1, correct. Okay, n is equal, when I put 3 pi, n is equal to 3, we will get sine 3 pi by 2, that will become -1. What is sine 5 pi by 2? What is sine 5 pi by, that is equal to 1. इसलिए alternate plus and minus आता है. तो जब भी odd term substitute का, even term तो पूरा 0 हो जाएगा. जब भी हम odd term substitute करेंगे तो ये वाला पार्ट जो है 3 हो जाएगा. मैंने 3 कॉमन लिया है. पहला n is equal to 1, n is equal to 3, n is equal to 5, and this also becomes alternate plus and minus because sine pi by 2 is 1, 3 pi by 2 is -1, 5 pi by 2 is +1. और ये सिंप्लीफाई किया तो 3al by 2. So we can cancel al throughout. Even 3 can be cancelled. तो pi by 4 is equal to the required answer. ठीक है, तो x इक्वल टू अगर l by 2 पुट करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड सीरीज मिलेगा. लिटिल बिट थोड़ा सा x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बिकॉज वी हैव टू पुट x in such a way that sine of even multiples of that term should become 0 and odd only should remain. इसलिए pi by 2 होना चाहिए ताकि कैसे sine of odd multiple of pi by 2 is you have some values but even multiples of pi by 2 will become 0. तो pi by 2 लाने के लिए हमें x को l by 2 पुट करना है. Next problem.
अभी यहाँ पे 4 इंटरवल्स दिए हैं, 0, 1 + x, 1 - x, 0। तो पहले हम क्या करेंगे, x को -x पुट करेंगे फर्स्ट इंटरवल में, x को -x इन फर्स्ट इंटरवल। तो क्या आएगा आंसर? व्हाट इज f ऑफ -x इन द फर्स्ट इंटरवल? f of x is 0 in -2 less than x less than -1. So what is the value of f of x, f of -x then? Is it 0 or is it some other value? Yes, correct. So हमें क्या करना है, x को -x अगर पुट किया मैंने फर्स्ट इंटरवल में, तो क्या आएगा? 0 लेस देन -2 लेस देन -x लेस देन 1। अगर इसको मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस साइन से, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो आई विल गेट 1 लेस देन x लेस देन 2 में 0। तो हमें चेक करना है 1 लेस देन x लेस देन 2 में कौन सा फंक्शन दिया है। तो जो यहाँ पे वही फंक्शन 1 लेस देन x लेस देन 2 में है, जो हमने यहाँ पे x को -x पुट किया तो हमको ये फंक्शन मिल गया। नाउ पुट x इज इक्वल टू -x इन द सेकेंड इंटरवल। If I put x is equal to -x in the second interval, we will get 1 - x minus 1 less than -x less than 0, which is equal to 0 less than x less than 1. So we get that 1 - x. अगर हमने यहाँ पे -x पुट किया तो हमको फोर्थ इंटरवल मिलता है। जब हमने x को -x पुट किया यहाँ पे, तो हमें ये वाला इंटरवल मिलता है। मतलब what type of function is this, even or odd? What type of function is this? Even है कि odd है? Even function है, ठीक है। उसके उल्टे साइड, when I have -2 less than x less than -1 में अगर 0 है, तो 1 लेस देन x लेस देन 2 में भी 0 ही है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे 1 + x है, अगर x को -x पुट करेंगे तो 1 - x आ जाता है। This is the opposite of this. That we say that it is symmetric about the y-axis. The even functions are symmetric about the y-axis. That is why when we put x is equal to -x in the first interval, we are getting the fourth interval. Similarly, x equal to -x in the second interval, we are getting the third interval. So it is an even function. So what is the value of L? What is the value of L? Or what is the length of the interval? Anyone you can say. What is the length of the interval? L is equal to 1. L is equal to 2. Okay. Always see the function what is given there. Always see the interval which is given in the problem. तो यहाँ पे function defined है -2 to +2. Even though the value is 0, we are not bothered about the value. Function is defined in -2 to +2, which means the length of the interval will become 4 or L will be equal to 2. ठीक है, अगर ये 0 है तो भी चलेगा, but we have to see in which intervals the function is defined. तो L की वैल्यू इक्वल टू 2 ही होगी, 1 नहीं होगी। यहाँ पे 0 है, इसके लिए हम मतलब इट इज डिफाइंड ओनली इन दिस, ऐसा नहीं जहाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे भी इवन का चेक कर रहे हैं। So it is defined from -2 to +2. So the L value will be equal to 2 only here also. It's an even function. Bn is equal to 0 and L is equal to 2. L is equal to 2. L is equal to 2. So now calculate A0 and An. Now L is equal to 2 करके हमको फॉर्मूला में लिखना है, उसके बाद
0 to 2 को हमें 0 to 1 plus 1 to 2 लिखना पड़ेगा. This is A0 formula, 2 by L integral 0 to L fx dx. Now L is equal to 2 here. So 2 by 2, that is 1, 0 to 2 fx. But the function is not defined directly in 0 to 2. So we have to write 0 to 2 as 0 to 1 plus 1 to 2. In 0 to 1, the function is 1 plus x है कि 1 minus x होगा function यहाँ पे. कौन सा फंक्शन लेना है हमको, 1 प्लस एक्स है या 1 माइनस एक्स है? माइनस 1 माइनस एक्स लेना है, बिकॉज इन 0 to 1 द फंक्शन डिफाइंड इज 1 माइनस एक्स एंड इन 1 to 2 द फंक्शन डिफाइंड इज 0. So writing 0 to 2 as 0 to 1 plus 1 to 2. 1 to 2 the function defined is 0 and 0 to 1 the function defined is 1 minus x. Integrate that. Calculate the value of A0. Integrating and calculating the value of A0. What is the value of A0? Minus 1 by 2. Okay. माइनस आएगा कि प्लस आएगा? हाँ, प्लस 1 by 2. Yes. Because 1 minus x square by 2, x minus x square by 2 आएगा ना, integration between 0 and 1. So it is 1 minus 1 by 2. 1 minus 1 by 2 is 1 by 2. Yes. So it is half. A0 is equal to 1 by 2. Calculating. Calculating A. Functions, the method is similar. Only हमें L लिखना है बराबर and then use the formula correctly. That is only we have to take care while solving these problems. A0 is 1 by 2. Calculating AN. L is equal to 2. So cos n pi x by 2 हो जाएगा. Again writing 0 to 2 as L is equal to 2. That is why 2 by 2 will become 1 here. 0 to 2 is 0 to 1 plus 1 to 2. 0 to 1 में 1 minus x है, 1 to 2 में 0 है function. This part will become 0 only integrating the first term. Use u into v and try the answer. u into v use करना है. u integral v minus इसका derivative इसका integration 2 upon n pi. Okay. Apply the upper limit, lower limit and check the value of an. When we put x is equal to 2, x is equal to 1, what is the value of sine pi n pi by 2? What is the value of sine n pi by 2? Okay, or we can say this term becomes 0 because 1 minus 1 is 0. The first term is 0. N pi by 2 is not 1. As we have done the previous problem also, n pi by 2 value will depend upon n. अगर n is equal to 1, तो sin pi by 2 1 है. When n is equal to 2, then sin 2 pi by 2 is 0. When n is equal to 3, sin 3 pi by 2 is... So all different values we are having for sin n pi by 2. So we cannot write it as one single term. It is going to be as it is. लेकिन यहाँ पे कैसे, अगर 1 को मैंने x को 1 पुट किया तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा. Minus minus minus. Again cos n pi by 2. That is also not a constant value. Because again अगर हम n को 1 पुट करेंगे तो cos pi by 2 0. अगर हम n को 2 पुट करेंगे तो cos 2 pi by 2 which is cos pi, that is minus 1.
Cos 3 pi by 2 is 0. Cos 4 pi is 1. So all different values we are having. So we cannot write that as one single term. So we have to keep it as it is. तो हम क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 1, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा बिकॉज 1 माइनस 1 इज 0. लोअर लिमिट में 0 हो जाएगा. अपर लिमिट x इज इक्वल टू 1, तो आई विल गेट cos n pi by 2. And when the lower limit minus minus minus, one more minus sign for the lower limit, तो ये प्लस हो जाएगा. तो 1 upon n pi by 2 the whole square. You cannot replace this by 1 or minus 1 or 0. It all depends upon the value of n. तो हमको वो टर्म वैसे का वैसे ही रखना है, minus cos n pi by 2. Okay, so now simplifying, so we can write 4 is common because n pi by 2 the whole square will become n square pi square by 4. 4 will go to the numerator, or I can write 4 by n square pi square into 1 minus cos n pi by 2. Cos n pi हम लोग minus 1 raised to n लिख सकते हैं, n pi by 2 we cannot write that as even multiple of pi because pi by 2. जब हम n की values put करेंगे तो cos n pi by 2 gives different values. We have to leave it as cos n pi by 2 only. ठीक है? Now substituting, is this true for all the values of n? It is true again because we are having n is equal to 1 to infinity and we are having only n square term in the denominator. So it is true for all the values of n. Substituting everything in the f of x function. ठीक है? तो ये याद रखो, sin n pi by 2 and cos n pi by 2 functions are not having a single value. Sin n pi by 2, cos n pi by 2 always depends upon the value. The value of cos n pi by 2 depends upon the value of n. Substitute everything in the f of x function and write the final answer. Hope all of you have written your attendance in the chat box. Yesterday also many had not written. Substituting, f(x) is equal to I'll just give you one more. Just tell me it's an odd or even function. ये कौन सा फंक्शन इतना बताओ खाली. f of x is equal to minus c, minus a less than x less than 0 equal to c, 0 less than x less than b. Just tell me what type of function is this. Odd है या even है या neither even nor odd है. Same, whatever we apply the concept for even and odd function when the function is defined in intervals, apply the same concept here also and check whether the function is an even function or odd function. बताओ कौन सा function होगा ये? ऑड है, ओके. अगर हमने x को -x पुट किया इन द फर्स्ट इंटरवल तो क्या वैल्यू बचेगी? -c है बिकॉज -c कांस्टेंट और डिपेंडिंग ऑन x. अगर f of x neither even nor odd. Okay, any other answers? Put x is equal to -x in the first interval. Yes, अगर वो x वेरिएबल नहीं है
So it is not depending on x. ठीक है? Since f of x is minus c, what will be f of minus x then? अगर x है तो हमें x को माइनस x पुट करना है, यहाँ पे x है ही नहीं, तो क्या होगा? f of x अगर माइनस c है तो what is f of माइनस x? कौन सा फंक्शन आएगा f of माइनस? सेम फंक्शन, कौन मतलब सेम फंक्शन रहेगा, है ना, कांस्टेंट फंक्शन. मींस इफ f of x is minus c, तो if f of x is minus c, then f of minus x is also minus c only. अगर x है तो हमें x को minus x पुट करना है, but there is no x in the first part, which means f of x is minus c, f of minus x is also minus c. But हमारा second interval जो है वो खाली c है, which means what type of function is this then? Okay, when I put x is equal to minus x, I will get the answer as minus c only, because it's not depending upon the value of x. Constant term है तो जैसा है वैसे ही term रहेगा यहाँ पे, which means I will get minus c in the interval 0 less than x less than a. लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 0 less than a less than x less than a में यहाँ पे c दिया हुआ है. यहाँ पे हमारा आया minus c, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है c, which means it is minus of the given function. So it is an odd function. So it is an odd function. ठीक है? तो यहाँ पे x नहीं दिया है, मतलब f of minus x की वैल्यू भी सेम ही होगी यहाँ पे. Clear this part? So f of minus x is minus c, which means that minus c is the negative of this interval. So it is an odd function, which means that a0, an are 0 and bn is equal to, we have to calculate. ठीक है? Clear this part? ये कैसे odd function हुआ? All of you? Okay, Aftab, you have told neither even nor odd. समझ में आया अभी? ठीक है, तो हमें क्या करना है? x को माइनस x पुट करना है. x को जब माइनस x पुट करेंगे तो यहाँ पे x का टर्म है ही नहीं. अगर f of x की वैल्यू 1 है तो f of minus x is also going to remain 1 only. Constant value है, it is not changing, it's not a variable function, it's only constant function. तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है minus c in 0 less than x less than a, but here we are given c, which means the negative of the given answer. So the function is an odd function. अगर odd function है तो a0, an 0 और bn is equal to calculate करना. Then the method same, because c constant है तो easily calculate हो जाता है. It's not a big integration, but this part is only important. It's an odd function a0, an equal to 0. ठीक है? You can calculate bn. Try this.